फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज़ बीम एंड टाइप्स ऑफ रोलर, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम जान लेते हैं बीम क्या होता है। व्हाट इज़ बीम? ए बीम इज ए member that carries transverse load that is perpendicular to the long axis, is that beam used in rooms, bridges, wooden planks which is flowing the river. In which transverse load is provided by man or person weight. Diving boat in swimming pool, cricket bat, etc. When ball impact on that, behaving like cantilever. In beam, axial dimension is greater than lateral dimension, and due to transverse forces, bending will develop. ओके, तो क्या हुआ? बीम इज ए member that carries transverse load that is perpendicular to the long axis. Is the beam used to rooms, bridges, wooden plank which is flowing in the river, in which transverse load is provided by man or person weight. ठीक है. Diving board is swimming pool and the cricket bat when ball impact on that, behaving like a cantilever beam. In beam, axial dimension is greater than the lateral dimension due to the transverse force, bending will develop. ठीक है. तो अभी टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। कितने टाइप्स का सपोर्ट होता है? एक होता है रोलर सपोर्ट, दो नंबर में, दूसरे नंबर में हिंज सपोर्ट, और तीसरे नंबर में फिक्स सपोर्ट, एंड चौथा नंबर में इंक्लाइन रोलर सपोर्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। कितने टाइप्स का सपोर्ट होता है? टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ेंगे आज। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, एक नंबर में आता है रोलर सपोर्ट।
रोलर सपोर्ट क्या होता है? रोलर सपोर्ट चलिए पढ़ते हैं। रोलर सपोर्ट is a designer used to roller support to prevent the vertical motion. Roller supports are used to bridges and special structure to allow the thermal movement, and designer does not use roller support on both the end of beam because it if some horizontal forces developed, beam will be unrestrained. ठीक है, तो दोनों तरफ बीम में कभी भी रोलर सपोर्ट नहीं दिया जाता है। अगर दिया जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप होगा, उसके कारण बीम अनरिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। डिज़ाइनर, पहले पॉइंट लिखिए, डिज़ाइनर यूज्ड रोलर सपोर्ट यूज़ करते हैं सपोर्ट टू प्रिवेंट द वर्टिकल मोशन के लिए रोलर सपोर्ट यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर में रोलर सपोर्ट्स आर यूज्ड इन ब्रिजेस एंड स्पेशल स्ट्रक्चर्स ब्रिजेस एक्सेट्रा में ये रोलर सपोर्ट अलाउ किया जाता है टू अलाउ थर्मल मूवमेंट, यूज़ किया जाता है टू अलाउ थर्मल मूवमेंट। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में लिखिए, डिज़ाइनर डज नॉट यूज्ड roller support does not use roller support on both end में कभी भी रोलर सपोर्ट्स यूज़ नहीं किया जाता ऑफ द बीम बिकॉज इफ यूज्ड इन is some horizontal forces will developed। ठीक है, और बीम will be unrestrained। ठीक है, ये रोलर सपोर्ट बोलते हैं इसको। और दूसरे नंबर पे हिंज सपोर्ट किसको कहता है? हिंज सपोर्ट इफ इट can resist in support it can resist vertical and horizontal motion both but allow rotation about axis of the film। ठीक है, most support for architectural or structure made by hinge support। अभी फिक्स सपोर्ट, तीसरे नंबर पे फिक्स सपोर्ट, ठीक है। फिक्स सपोर्ट, दिस सपोर्ट, व्हाट इज फिक्स? दिस सपोर्ट resist horizontal and vertical motion and rotation also। okay, by removing fixed support and
three reaction will developed. Two forces of equation and one moment of equation. Two force of equation and one moment equation. ठीक है. It is mostly used support by the designer. ठीक है. तो फिक्स सपोर्ट क्या होता है? दिस सपोर्ट्स रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन एंड रोटेशन आल्सो. बाय removing the fixed support, three reactions will develop. Two forces of equation and by removing the fixed support, three reactions will develop. Two equation of force and one moment of equation. It mostly used support by the designer. ठीक है. डिज़ाइनर लोग ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं. और 4 नंबर में इंक्लाइन रोलर सपोर्ट. Inclined roller support. It is behaving like hinge supports at resist vertical and horizontal motion. Okay. Inclined roller support for चौथी नंबर पे इट्स behaving like hinge supports at resist vertical and horizontal motion. ठीक है.